Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesa Shunyavadi Paschatya Deshatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Now, you can start by reading this translation. I don't know where this introductory bit came from. You must have found it somewhere else. This first bit of the translation, the first line, I don't know where that came from. So let's start with the translation here. Oh, but if you speak, it's going to go off your screen, right? Oh, okay, good. Because, yeah, okay. कृष्ण चेतना विकसित करने में उत्साह, भक्ति में सेवा में विश्वास, भगवत प्रेम की प्राप्ति में धैर्य, कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति में सेवा के अनुकूल क्रियाकलापों में प्रवृत्त रहना, कुसंग त्याग और वैष्णव आचार व्यवहार का अनुशीलन। तब किस प्रकार मैं माया के संग का त्याग करके भगवान के चरण सदा अनुचित आचार व्यवहार में डूबा रहता हूँ और ना ही मैं भक्तों का संग करने का कोई प्रयास करता हूँ। इतना सब होते हुए भी मैं वैष्णव परिधान धारण करता हूँ और दूसरों को उपदेश देता हूँ। यह निश्चय ही माया का परिहास है। हे भगवान हरि, इस परिस्थिति में अब मुझे केवल आपकी अहेतु की कृपा का ही आश्रय है। वह दिन कब आएगा जब मैं पूर्ण निष्ठा पूर्वक गुरु के आनुगत्य में भगवत भजन में प्रवृत्त होऊंगा। धन्यवाद। Thank you. Okay, so this verse we're going to study today is mentioned in those first two verses that we just read the translation for about these 6 qualities. ये जो आज हम श्लोक पढ़ने वाले हैं, इसमें भक्त की 6 गुणों के बारे में बताया गया है। So I think we'll come back to this later. Now, हम उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, परंतु अब so Abba, is somebody there who wants to read today's verse and translation, sloka number 3? Okay, Viraj Krishna Prabhu has his hand up. Dhanyavad Prabhu. Jai. अनुवाद शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। नंबर 1, उत्साही बने रहना। नंबर 2, निश्चय के साथ प्रयास करना। नंबर 3, धैर्यवान होना। नंबर 4, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। नंबर 5, अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा नंबर 6, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है, इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है: अन्याभिलाषिता शून्यम
ज्ञानकमञ्जनावृतं आत्मतुल्यं कृष्णानुशीलं भक्तिरुत्तमम् उत्तम भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। ज्यों ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छद्म योगी सिखाते हैं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति में सेवा का पता नहीं है। इसलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना, किंतु भक्ति में सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारिक कार्यकलापों को रोकती है अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्य में भी लगाती है। श्री प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं, सर्वान कीर्तनम विष्णु विष्णुस्मरणं पादसेवनम पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् भक्ति की 9 विधियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना। नंबर 2, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना। नंबर 3, भगवान का स्मरण करना। नंबर 4, भगवान के चरणों की सेवा करना। नंबर 5, अक्षय विग्रह की पूजा करना। नंबर 6, भगवान को नमस्कार करना। नंबर 7, भगवान के दास रूप में कार्य करना। नंबर 8, भगवान के साथ मित्रता करना। नंबर 9, भगवान के प्रति पूर्णता आत्मसमर्पण करना। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में शरणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अनादृत पुरुषों की बातें कान से ना सुने, अभी तो योग्य व्यक्ति के पास जाए, जैसा कि भगवद गीता 4.34 में संस्तुति की गई है। तद्विधि प्रणिपातेन प्रणिपातेन परिहर्षेण कृष्णेन सेवया सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तनिर्दाशिनः उनके पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। तो रूप व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है, तद विज्ञानार्थम सा गुरु मेवा विगच्छेत। उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया, प्रमाण क्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मा की सृष्टि का वितरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता का बीज प्राप्त कर सकता है। यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19.151। सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय हैं, उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदीगृह जैसा है। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदीगृह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि ना जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर करने के लिए बाध्य होते रहते हैं। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उससे सुनता है तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के इस सुअवसर का लाभ उठाता है तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस सुअवसर को अत्यंत उत्साहपूर्वक स्वीकार करे। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थाकिल चेष्टा भक्ति रसा में सिंधु। जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है, यहाँ उन्हें संकुचित करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी हैं, अतः कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवत गीता 9.4 में कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थिता। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है।
सारे जीव मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। उदाहरणार्थ, इस समय हम डिक्टाफोन बोल कर लिखने वाला यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकतावादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया, उसने इसे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निस्संदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूप में कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं क्रियाओं से बने हुए हैं। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु इसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। कृष्ण के कथन मत्स्थानी सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। भक्तजन उन सही सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सके। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। निस्संदेह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था, तो प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्य पूर्वक करते रहे, अतः धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे और अब वे इसमें उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अभी तो गुरु से उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्य पूर्वक पूरा करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की सफल सफलता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। यह स्वाभाविक है कि एक नवविवाहिता कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। निस्संदेह विवाह होते ही वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वास होना पड़ेगा कि निश्चित समय में संतान का जन्म होगा। इसी प्रकार भक्ति में संपन्न का अर्थ है विश्वस्त होना। भक्त सोचता है अवश्य रक्षित कृष्ण, कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे। यही विश्वास कहलाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तना, विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति भी नष्ट हो जाएगी। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत हैं: अवैध मैथुन, मांसाहार, क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों का सेवन, इन चारों का बहिष्कार। भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है, तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। अतः श्री रूप गोस्वामी की संस्तुति है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मनुष्य को वैदिक भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेधों यम के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां नियम भी हैं, जैसा प्रतिदिन जप माला पर 16 माला का जप करना, इन अनुष्ठानों को उत्साहपूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना, यही तत्त कर्म प्रवर्तनात् अर्थात भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। इनमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य अभक्तगण का समावेश हो जाता है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके गृहस्थ भक्त में वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा, उन्होंने तुरंत उत्तर दिया था, असत्य संग त्यागा यही वैष्णवाचार। वैष्णव वह है जो संसारी लोगों का अभक्तों की संगति छोड़ दे। अतः श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने संस्तुति की है, कानेरे चरण से भी भक्त धन्यवाद। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए और पूर्ववर्ती आचार्यों षड गोस्वामियों यथा श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है, जिससे लोगों को भक्तों के साथ रहने का आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। भक्ति में सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कर्मश नहीं होता, यह विशुद्ध सत्व कहलाता है।
अर्थात यह शुद्ध सत्वगुण का या रजो तथा उसमें गुणों के कलमश से मुक्त सत्वगुण का स्तर है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातःकाल 4 बजे तक जग जाएं और मंगल आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग लें, तब श्रीमद् भागवतम पढ़ें, कीर्तन करें आदि आदि। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। यह सतोवृत्ति है, अर्थात उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन है जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया। यदि कोई श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का कड़ाई से पालन करता है, उत्साही होना, दृढ़ निश्चयी होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों का पालन करना तथा भक्तों की संगति करना, तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करता है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, काम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारिक ऐश्वर्य का संग्रह है तथा योग सिद्धियां अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत है। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णता उदासीन रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना है। भगवत गीता 2.69 के अनुसार या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जगने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जगने का समय है वह अंतर्दृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। भगवान की भक्ति में व्यवस्था ही जीव का प्राण तथा आत्मा है। यही वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम स्थिति है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए और उसे यह विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप यथा मानसिक तर्क, सकाम कर्म या योग प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं है। भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही होगा। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कहा गया है, मनुष्य को भली भांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है वे भले ही लाख स्तर तपस्याएं करें, लेकिन उनके मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं है। 7वें स्कंद में ही आगे कहा गया, भले ही मानसिक चिंतक, ज्ञानी तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लें, फिर भी वे पतित होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। तो भगवत भक्तों का कभी पतन नहीं होता। भगवत गीता 9.31 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, कौन क्या प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। पुनः भगवत गीता 2.40 में कृष्ण कहते हैं, स्नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते धवलपमस्या धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस प्रयास का ना विनाश होता है ना इसमें कमी आती है। इस पथ पर थोड़ी सी प्रगति भी मनुष्य की भयंकर से भयंकर भय से रक्षा कर सकती है। भक्ति में सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य जन्म सफलता की ओर बलपूर्वक उठता चला जाता है। कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्य को त्याग कर भावावेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है और इस तरह में भक्ति की प्रारंभिक शुरुआत कर देता है। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित हो भी जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं होती। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ होता है जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता। पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों ना हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से प्रारंभ हो जाएगी जहाँ उसने छोड़ी थी। भक्ति अहेतुकीय प्रतिहता है, यहाँ ना तो किसी संसारिक कारण का फल है, ना ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम की जा सकती है। अतः भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों के कार्यकलापों में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए। निस्संदेह सकाम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन उनके चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। इसके लिए बाह्य प्रयास नहीं करना होता, जैसा कि श्रीमद् भागवत 5.18.12 में पुष्टि की गई है। जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतः वह भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थिर हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति संसारी प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ हो, या महात्मा के उस पद तक ऊपर नहीं उठ सकता, वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। भगवद गीता 9.13 के अनुसार, महात्मा नस्तु मां पार्थ दयामी प्रकृति माश्रिता भजन्त्यन मंतो ज्ञात्वा भूतादि मव्यम। हे पिता पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं,
धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के नियमित कार्यों को उत्साहपूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। हरे कृष्णा। Great. Thank you very much. So, what we should do now is just read the summary that Srimati has done of this purport. Vrindavanish. अब हम श्रीमती जी के द्वारा दी गई इस तात्पर्य का सार पढ़ेंगे। Have you got this on your computer also? Yes. Good. Yes. Thank you. श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 3 मानचित्र अवलोकन। भक्ति में सेवा मात्र भावुक चिंतन अथवा परिकल्पित भावातिरेक नहीं होता, वरन इसकी विषय वस्तु व्यावहारिक गतिशीलता है। भक्ति रसामृत हिंदी 1.1.11। भक्ति एक प्रकार से संवर्धित की जाती है। भक्ति में सेवा हमें नवधा भक्ति तथा अन्य अर्थपूर्ण भक्ति कार्यों में लगाकर व्यस्त रखती है। श्रीमद् भागवतम 7.5.324। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति में श्रवण करना प्रथम सोपान है। हमें केवल प्रामाणिक गुरु से ही श्रवण करना चाहिए। भगवद गीता 4.34 और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.151। तत्पश्चात प्रामाणिक गुरु के आनुगत्य में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण भक्ति के अनुकूल सारे कार्यकलाप करने चाहिए। शुक्त भक्ति में सेवा के निष्पादन के 6 मूलभूत सिद्धांत हैं। मनोभाव अर्थात उत्साह। श्री कृष्ण भावनामृत में बुद्धिमत्ता युक्त उद्यम अथवा उत्साह या प्रयास, इसी को उत्साह की संज्ञा दी जाती है। उत्साह का अर्थ है गतिविधि। हमें सदा कृष्ण के कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। बिना उत्साह के तो भौतिक प्रकृति भी असंभव है। दूसरा, निश्चय या आत्मविश्वास सहित प्रयासरत होना। भक्ति में सेवा में शरणागति का अर्थ है कि हमें कृष्ण कृपा पर पूर्ण विश्वास हो। हमें यह आत्मविश्वास जागृत होना चाहिए कि भक्ति में सेवा में किए गए प्रयासों के अतिरिक्त अन्य कोई और प्रयास हमें स्थायी लाभ नहीं देगा। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। भक्ति में सेवा व साधना में हमारा पूर्ण विश्वास हमें हमारे इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति कराने में सहायक होगा। तीसरा, धैर्य। केवल गुरु तथा भगवान की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। निर्भर रहकर ही धैर्यपूर्वक भक्ति में सेवा का निष्पादन करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित गतिविधियों के सफलतापूर्ण निष्पादन में धैर्य तथा आत्मविश्वास दोनों अनिवार्य होते हैं। आचरण नंबर 4, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का अनुकरण करना। भक्ति के नियामक सिद्धांतों का अनादर या उपेक्षा भक्ति में सेवा का नाश करती है। यदि कोई भक्ति के 4 नियंत्रक सिद्धांतों के पालन में ढिलाई करता है तो निश्चय ही उसकी भक्ति में प्रगति रुक जाती है। 16 माला का जप भी निष्ठापूर्वक किया जाना चाहिए। एक भक्त को अनित्य व अस्थायी भौतिक कार्यों के प्रति पूर्णतः बेरुखा होना चाहिए और अपना सारा ध्यान भक्ति के नियामक सिद्धांतों के पालन में लगाना चाहिए। नंबर 5, कुसंग का त्याग। एक भक्त को कर्मियों, ज्ञानियों और योगियों का संग पूर्णतः त्याग देना चाहिए। उसे सदा भक्तों की संगति करनी चाहिए। इस्कॉन के केंद्रों की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है। यहाँ पर सांसारिक संघ की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। छठा, सतोवृत्ति अर्थात
पूर्वगत आचार्यों के द्वारा बतलाए गए मार्ग का अनुकरण। तत्वतः इसका अर्थ है केवल कृष्ण भावना भावित गतिविधियों में अपना संपूर्ण समय लगाए। उदाहरण के तौर पर प्रातःकालीन मंदिर के कार्यक्रम में भाग ले। यदि कोई रूप गोस्वामी द्वारा उद्धृत श्लोक में बताए गए 6 सिद्धांतों का निष्ठापूर्वक पालन करता है, यानी वह भक्ति में सेवा में उत्साही बना रहे, निश्चय के साथ प्रयासरत रहे, धैर्यवान रहे, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करे, कुसंग का त्याग कर दे, पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग का अनुसरण करे, तो निश्चय ही उसे भक्ति उसकी भक्ति में प्रगति निश्चित है। धन्यवाद। Thank you very much. Hare Krishna. Okay, now if you remember when we were going through that purport, we had another one of this International Society for Krishna Consciousness is 4. जब हम इसका तात्पर्य पढ़ रहे थे तो नंबर 4 पॉइंट में हमने इस्कॉन के बारे में पढ़ा। So there's another one to keep in mind. For opening centers, just to invite people to live in the company of devotees and practice regulative principles of spiritual life. इस्कॉन सभी लोगों को आमंत्रित करता है कि वह आध्यात्मिक जीवन जीकर अपने जीवन का उत्थान करें। The other thing that I always remember from this purport is Prabhupada says, in the Krishna conscious movement, we require everyone to rise early in the morning by 4 o'clock and attend Mangal Arati. दूसरी बात जो माता जी को ध्यान आ रही है वह यह है कि प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ये लिखते हैं कि ये चाहते इस्कॉन संस्था यही चाहती है कि सभी लोग मंगला आरती करने के लिए सुबह 4 बजे उठें और मंदिर के कार्यक्रमों में भाग लें। So now what we're going to do now is we'll go through Srimati's elaboration on these 6 points from Srila Prabhupada's purports in other of his literatures. अब हम प्रभुपाद द्वारा दिए गए तात्पर्यों पर श्रीमती जी के द्वारा दिए गए सार की और अवलोकन करेंगे। ये और आचार्यों की कमेंट्री से भी उद्धृत। So the first one is in Narada Bhakti Sutra. Srila Prabhupada says that we have to give up being enthusiastic about material achievements, but we should change. सर्वप्रथम नारद भक्ति सूत्र से है जिसमें प्रभुपाद बताते हैं कि हमें सांसारिक और भौतिक गतिविधियों के प्रति पूरी तरह उदासीन रहना चाहिए। Oh, one thing I forgot to mention just before we come to that was इससे पूर्व कुछ बताना भूल गई हूँ, उसी के बारे में पहले कहना चाहती हूँ। we remember we had a summary that said that we were doing in the beginning, we were doing 2 verses which were things to avoid that were unfavorable to bhakti. And now we're starting on 5 verses which are adopting things that are favorable to bhakti. So this is the first one of the favorable things that we're going to adopt. इससे पूर्व हमने जो 2 श्लोक थे उसमें से एक श्लोक में हमने उन 6 वस्तुओं के बारे में पढ़ा था जो भक्ति की प्रतिकूल हैं। अगले 5 वर्सेस में यानी श्लोकों में हमें भक्ति के अनुकूल जो कार्य निष्पादन करना चाहिए उनके बारे में हमें बताया गया है। उन 5 श्लोकों में से ये पहला है जो हमें भक्ति के अनुकूल स्थिति का वर्णन करता है। Okay. So the first thing is this enthusiasm. It's natural for us to have enthusiasm, but we have to purify our enthusiasm and use it for Krishna consciousness. सबसे सर्वप्रथम आता है उत्साह। उत्साह होना एक प्राकृतिक क्रिया है। हमें लेकिन अपना उत्साह एक पॉजिटिव दिशा में रखना चाहिए। Okay, now in this second quote, Srila Prabhupada is giving a caution. He says if you're lacking enthusiasm,
you shouldn't just run around doing things. He says, if you want to actually make progress in devotional life, utsaham, enthusiasm, is the first thing you need. तो यदि हम भक्ति में प्रगति करने के इच्छुक हैं तो हम सबसे पहले हमें उत्साहित रहना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं। But he says if you're lacking enthusiasm, then you should take a little rest instead of agitating the mind too much. यदि कभी कभी हमें उत्साह की कमी आती है तो इधर उधर भागने से अच्छा है कि हमें थोड़ा अपने आप को विश्राम देना चाहिए, ना कि अपने मन को किसी भी तरह व्यथित होना देना चाहिए। यानी हमें अपने मन को नियंत्रण में लाकर फिर से उत्साहपूर्वक भक्ति के कार्यों में लग जाना चाहिए। And he gives an example to help us understand this. He says, so if something is dropped in the water, in the river, you cannot see it because of the agitation of the water. वो एक उदाहरण देकर हमें ये बात समझाते हैं, यदि कोई वस्तु पानी में गिर जाती है तो पानी में तरंगे उठने लगती हैं। But if you stand still for some time and the water settles, then you'll be able to see where you dropped the thing you were lost. तरंगे उठते पानी में हम अपनी वस्तु को नहीं ढूंढ पाएंगे, परंतु यदि हम उस पानी को थोड़ी देर ठहरने दें तो हमें आसानी से अपनी वस्तु कहाँ गिरी है इसका हमें पता लग जाएगा। So then he says that therefore there's no question of being disappointed. If our enthusiasm becomes agitated, we should sit down in any temple and chant Hare Krishna. तो इसी प्रकार यदि हम भक्ति में उत्साह खो देते हैं तो हमें धैर्यपूर्वक एक मंदिर में कहीं पे भी बैठकर शांति पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपने उत्साह को वापस आने देने तक जप करना चाहिए। Now, the next quote, Srila Prabhupada is quoting his Guru Maharaj Bhaktisiddhanta Saraswati, who said, Pranay Achayara se hetu prachar. दूसरी तरफ दूसरे उदाहरण में प्रभुपाद अपने गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का ही एक उदाहरण देते हैं, एक उद्धृत करते हैं, एक मूल बात। And it says, a person can become a preacher if he has got life. एक व्यक्ति प्रचारक तभी बनता है यदि वह जीवंत हो। A dead man cannot become a preacher. एक मृत व्यक्ति कभी भी प्रचारक नहीं बन सकता। So simply we require enthusiasm. उसके लिए केवल हमें उत्साह की आवश्यकता होती है। And I like how he expresses this. He says, my Lord is so great, so kind, so beautiful, so wonderful. वो कहते हैं कि मेरे भगवान इतने सुंदर हैं, इतने महान हैं और इतने महान हैं Or kind. और इतने इतने दयापूर्ण हैं। So I must speak something about my Lord. इसलिए मुझे कुछ तो ऐसे भगवान के बारे में बोलना चाहिए। This is enthusiasm. यही यही उत्साह। And another similar one in another lecture, he says, we should be enthusiasm. Krishna consciousness is so nice. We've heard so many nice things about Krishna consciousness. दूसरे अपने एक वक्तव्य में प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना अमृत इतनी सुंदर है, इतना सुंदर है कि हमें We've heard so many nice things about Krishna consciousness. कि हमने कि कृष्ण भावना अमृत के बारे में कितनी सुंदर बातें हमने श्रवण कर रखी। It is so successful for the human form of life. ये एक मानव जीवन के लिए हमेशा ही एक सफल प्रयास रहा। So I must have it. इसलिए मुझे और सभी को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसको व्यवहार में लाना चाहिए। I must execute Krishna consciousness. मुझे इसमें प्रयासरत रहना चाहिए। This is called utsahat, to become energetic, not lethargic. यही उत्साह
So then he's saying that utsaha means determination. It means not, we don't just sit and say, when Krishna is merciful, then it will happen. हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिस जिस इस विचार में रहकर कि जब भगवान मेरे अनुकूल होंगे तब मैं भक्ति करूंगा या भक्ति में सेवा का निष्पादन करूंगा. Krishna is already merciful, but if we do not take it, what will Krishna do? भगवान तो दयापूर्ण है ही, परंतु यदि हम उत्साह नहीं रखेंगे तो फिर भगवान क्या कर सकते हैं. Therefore, if we want to earn that position and go back home, back to Godhead, we must be very much enthusiastic. यदि हम चाहते हैं कि हम भगवत धाम हम चले जाएं तो हमें इस धैर्य को बनाए रखना चाहिए और धैर्य पूर्वक अपनी भक्ति में सेवा में पूरे उत्साह के साथ लगे रहना. And some hint about how to become enthusiastic. तो ये कुछ हिंट्स थे जिसमें हमें बताया जाता है कि किस तरह हम उत्साही भक्ति में उत्साही बने रहें. He says the sound of the holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, everlastingly increases the enthusiasm of the chanter. एक बात और है कि महामंत्र की दिव्य ध्वनि सुनते रहने से भी हमें भक्ति में उत्साह हमारा नित्य रूप से बना रहता है. If we are actually chanting Hare Krishna, we will become enthusiastic. यदि हम सत्यता में महामंत्र का जप करते हैं तो हम उत्साही बने रहते हैं. We will think, oh, I shall serve, oh, I shall do this, and I shall do this. This is the effect of chanting nicely. शुद्ध जप का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि हम हर समय यही सोचते हैं कि मैं इस प्रकार भगवत सेवा में लगूंगा, मैं इस प्रकार भक्ति के कार्यों का निष्पादन करूंगा और मैं इस तरह भगवत चिंतन करता रहूंगा और उसमें उत्साही बना रहूंगा. He quotes this quote, he's quoted in several places, Phalena parichiyate. We see things by the result. इस बात का ये बात प्रभुपाद ने एक जगह कही है कि हम अपना इसका रिजल्ट अपने कार्यों में देख सकते हैं. We will become enthusiastic more and more, which is in Shikshastakam Anandamburi Vardhanam. ये हम शिक्षाष्टकम में भी देखते हैं, आनंदम पूरी वर्धनम. The service attitude will increase. भक्ति में हमारी सेवा का बढ़ना ही हमारा उत्साह. Okay. Nischaya, which translates as confidence or determination. निश्चय, ये अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस या डिटर्मिनेशन का ट्रांसलेशन. Yeah, anuvad, right? Those who are saintly simply depend on Krishna. जो साधु होते हैं वो केवल कृष्ण की दया पर निर्भर रहते हैं या सिर्फ कृष्ण पर निर्भर रहते हैं. Why can they be confident? Krishna is supplying from the elephant down to the ant. Why not to me? वह इसलिए क्योंकि कृष्ण उन्हें हाथी से लेकर चींटी तक सब कुछ प्राप्त कराने में सक्षम है. तो क्यों ना ऐसा रहे कि वे कृष्ण की भक्ति में निश्चयपूर्वक लगे रहें. I'm trying to engage in his service. He's not ungrateful. हम सेवा में लगने का प्रयास कर रहे हैं तो इस I'm trying to engage in his service. He is not ungrateful. हम सेवा में लगने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान इस बात को मानते हैं. Whenever you do service anyway, you get some reciprocation. जब हम जरा थोड़ी भी भगवत सेवा करते हैं तो भगवान उसका हमें उसी भाषा में हमें रेसिप्रोकेट करते हैं. हम हमसे
आदान प्रदान करते हैं सेवा। We should simply exert all our energy in service of Krishna and everything will be all right. हमें अपनी सारी शक्ति कृष्ण सेवा में लगानी चाहिए और तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। This is called surrender and confidence. यही शरणागति है और यही निश्चय है। The word drida nishchaya, steadfast conviction, indicates that in any circumstance a devotee is completely determined to go on with his prescribed duties for Krishna. दृढ़ निश्चय का अर्थ है कि एक भक्त हर परिस्थिति में, अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति में भी अपनी भक्ति में सेवाओं के प्रति पूर्णतः डिवोटेड रहता है, मतलब पूर्णतः लगा रहता है बिना रुके। I will never give up my devotional service to him. और वह यही सोचता है कि मैं अपनी भक्ति में सेवा का त्याग कभी नहीं करूंगा। Even if the Lord places millions of obstacles in my path, चाहे भक्ति में सेवा करते हुए मेरे मार्ग में हजारों हजार दिक्कतें ही क्यों ना आए। even if because of my offenses I will go to hell, यदि ऐसा मैं तब भी करूंगा यदि मैं नरक में ही क्यों ना चला जाऊं, परंतु मैं अपनी भक्ति में सेवा को कभी नहीं छोड़ूंगा। very good. So we should not get impatient. We should be not saying, I am working for hard for Krishna, but I'm not getting anything from him. Krishna will give us a chance. हमें अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान हम पर कृपालु रहते हैं और हमें कोई ना कोई अवसर वे अवश्य प्रदान करते हैं। Actually, he's giving us a chance always, 24 hours. We just don't perceive it. दरअसल भगवान हमें हमेशा ही अवसर देते हैं, 24 घंटे ये अवसर हमारे सामने होते हैं, परंतु हम उनको देख नहीं पाते। Rest assured, when we have taken shelter of the lotus feet of Krishna fully, without reservation, he will be pleased. It may take some time for us to realize it. हमें इस बात को समझने में हो सकता है थोड़ा समय लग जाए कि हमें भगवान Yeah. We take shelter of the lotus feet of Krishna fully without reservation, then Krishna will be pleased. यदि हम भगवान के चरण कमलों की शरण बिना किसी बुरा छिपाव के लेते हैं तो भगवान हमसे अवश्य प्रसन्न होते हैं। But it may take some time for us to realize. परंतु इस बात को समझने में हो सकता है हमें थोड़ा समय लगे। If one becomes disappointed in his service to the Supreme Lord, we must immediately reject that disappointment and replace with confidence. यदि हमें कभी-कभी अपनी भक्ति में सेवा से थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट यानी थोड़ा भी नकारात्मक ऊर्जा हमें आती है तो हमें तुरंत ही उसको नकार कर अपने आप को पूर्ण तरीके से भक्ति में सेवा में दोबारा से लगाने का प्रयास करना चाहिए। Krishna is able. He is powerful, omnipotent. He can protect you. भगवान पूर्ण शक्तिमान है, वो हमें हर रुकावट से बचाने में पूर्ण तरह सक्षम है। He says in Bhagavad Gita, which is 1866, Aham tvam sarva papabhyo mokshaya shami. It is a fact. Certainly, Krishna will give us protection. भगवद गीता के 18.66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो ये बात सर्वथा सत्य है कि भगवान हमें हर ऑब्स्टिकल, हर रुकावट से बचाते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। Okay, so the next one is patience. अगला धैर्य के बारे में है। So we should not think, immediately I will become Krishna conscious and perfect.
तुरंत ही भक्ति में बिल्कुल पारंगत हो जाऊंगा. We are in an imperfect atmosphere, so there will be many imperfections. हम में अभी बहुत सी अशुद्धियां हैं. हमारे आसपास का वातावरण भी इतना अच्छा और परफेक्ट नहीं है. But if we patiently go on executing our duties in devotional service, परंतु यदि हम भक्ति में सेवा में धैर्य रखकर अपनी सारे ड्यूटीज को करते चले जाएं, as, uh, as directed in the Shastras and confirmed by the spiritual master. जैसे कि हमारे गुरु हमें बताते हैं या शास्त्रों में जो विधित विधियां हैं उनका हम यदि पालन करते चले जाएं, Then rest assured that your success is guaranteed. तब हमारी सफलता निश्चित है. Okay, the other one we've already read. So that's all we have for patience. The next one is tat tat karma pravartana. अगला तत् कर्म प्रवर्तनात् के बारे में है. Various activities favorable for devotional service. ये वो कार्य हैं जो कि भक्ति में सेवा के लिए बहुत बहुत ही अनुकूल हैं. So all the rules and regulations of the Vedas are meant for knowing Krishna. सारी नियम और नियंत्रण भगवान कृष्ण को पूर्णतः जानने के लिए ही बनाए गए. However sinful a man may be, if he receives knowledge from the proper spiritual master and repents his past activities and sinful life, यदि कोई पाप आत्मा ही क्यों न हो, परंतु यदि वह गुरु के निर्देशों का पालन करता है तो or repents his past activities and sinful life and stops them, और अपने पापी जीवन के बारे में वह प्रायश्चित करता है, तब he immediately becomes eligible to return home back to Godhead. तो वह भगवत प्राप्ति और भगवत धाम जाने के लिए अपनी स्थिति को पूर्ण कर लेता है, मतलब पक्की कर लेता है. This is made possible just by following the rules and regulations given by Shastra and following the bona fide spiritual master. ये केवल शास्त्र विदित नियमों का और अपने गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके व्यक्ति कर सकता है. Whether one lives in India or outside India, he is called a Yavana or Mlecha if he does not follow Vedic principles. यदि कोई व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, चाहे वह भारत में रहे या विश्व में कहीं और रहे, वह यवन या मल्लेच कहलाता है. Regulations are meant for human beings, not for animals. भक्ति के नियंत्रण या नियम केवल मनुष्य के लिए हैं, किसी जानवरों के लिए नहीं. For example, the traffic regulations on the street, which tell whether you to keep either left or right on the street, are meant for the human beings. The animal will not be violating. जिस प्रकार ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं वो मनुष्यों के लिए ही हैं, जानवरों के लिए नहीं. बिल्कुल उसी. Yeah, if an animal violates such a law, he is never punished, but the human being will be punished. यदि कोई जानवर इस तरह ट्रैफिक रूल्स का को तोड़ता है तो उसको कोई सजा नहीं मिलती, परंतु यदि कोई व्यक्ति तोड़ेगा तो अवश्य में वह दंडनीय करता है. Similarly, the Vedas are not meant for animals, but for the understanding of human society. इसी प्रकार वेदों की रचना जानवरों की समझ के लिए नहीं बनाई गई है, वह केवल मनुष्य समाज के लिए ही उनकी रचना है. So, a person who indiscriminately violates the rules and regulations given by the Vedas is liable to be punished. इसीलिए जो व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों को तोड़ता है, उनका पालन नहीं करता है, वह दंड के योग्य है.
And so Prabhupada says we cannot expect Krishna to give us protection, and we just carry on and doing whatever we like. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि तब हम ऐसा नहीं कर सकते. We don't expect Krishna to continue to give us protection if we think we can just go on and do whatever we like and eat whatever we like. प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति में दिए गए हमें यदि नियमों का पालन नहीं करते, जैसे कि कुछ भी खा लें, या यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें भगवान हमारी रक्षा करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है. So, of course, Prabhupada gives the example of the false gurus who say you don't have to do anything. You just pay money for a mantra and you can do anything you like. प्रभुपाद हमें इसका उदाहरण देते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम मंत्र के लिए पैसे दें और 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 अपनी मनमानी करते हैं. So he's giving the example. He says people come to him and say, Swamiji, you're very conservative, but we have to become conservative. बहुत से लोग मुझ तक आते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी आप बहुत ही दकियानूसी हैं, परंतु हमें ऐसा होना पड़ता है क्योंकि ये भक्ति के नियमों की मांग है. Yes. One should understand what is duty and what is not duty by the regulations of the scriptures. हमें अपने कर्तव्यों और अकर्तव्यों के बारे में जानना चाहिए और इसकी जानने की विधि है वैदिक शास्त्रों में बताए गए नियम. Knowing such rules and regulations, one should act so one may be gradually elevated. तो हम जब इन कर्तव्यों का जो कि वेदों में बताया गया है उनका पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी उन्नति होती जाती है. Okay, so that's Tat Tat Karma Pravartana. Next is Sangha Tyag, giving up the association of non-devotees. अगला है संग त्याग, जिसका अर्थ है कि अभक्तों का संग त्याग देना. Devotees should always give up the company of non-devotees and always keep company with devotees. एक भक्त को केवल भक्तों का संग करना चाहिए, अभक्तों का संग त्याग देना. Actually, a living being cannot be a non-devotee because of his constitutional position. But when one becomes... Yeah, okay. एक व्यक्ति को हमेशा ही भक्तों का संग ही अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारा प्राकृतिक स्वभाव. But when one becomes a non-devotee or non-believer, it is understood that the person is not in a sound condition of life. यदि कोई अभक्तों का संग करता है तो समझना चाहिए कि वह अपनी सहज स्थिति से बहुत परे है, अर्थात अपनी सहज स्थिति में वह मनुष्य नहीं है. A motivated devotee or a non-devotee are on material platform, and they are called prakrita. An intermediate devotee does not mix with such materialistic people. एक प्राकृत व्यक्ति, Yeah, a motivated devotee or a non-devotee. Both are prakrita. एक अभक्त और एक भक्ति में प्रवृत्त जो व्यक्ति नहीं है वह प्राकृत कहलाता है. An intermediate devotee does not mix with such materialistic people. एक मध्यम अधिकारी भक्त ऐसे प्राकृत लोगों से कभी भी आचार व्यवहार नहीं करता, उनके साथ नहीं मिल सकता. Okay, now find the beginning of this. If one is in good association, he can develop the mode of goodness. यदि हम अच्छे संग में सत्संग में रहते हैं तो धीरे धीरे हम सात्विक गुणों को विकसित करते हैं. If one is in bad association, he may develop the mode of ignorance or darkness. परंतु यदि हम कुसंग करते हैं तो हम में तमोगुण की वृद्धि होती जाती है. So there is a chance of being elevated or degraded by our association. तो संग ये डिसाइड करता है, ये नियमक करता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं
या हमारी या हम नीचे गिर रहे हैं. So we should always try to raise ourselves by the association of great soul. तो हमें संग में रहकर, excuse me माताजी, someone is here with me. Okay, Excuse me. sure. That's okay. We should try and raise ourselves by the association of a great soul. माताजी, kindly repeat once. I'm sorry. Sure. We shall try and raise ourselves by the association of great souls. तो इस प्रकार हमें भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए. सत्संग में रहकर हमें भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए. That is the way of perfection of life. यही जीवन को सत्य करने का तरीका. A Vaishnava's behavior is that he should give up the company of asat, non-devotee. एक वैष्णव हमेशा ही असत्संग का त्याग करता है. This is his first business because he will become infected. ये उसका प्रथम कर्तव्य है क्योंकि उससे उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है. If you mix with non-devotees, then whatever you have learned, you will forget. यदि आप कुसंग का साथ करते हैं तो आपने जो भी कुछ सीखा है वह शीघ्र ही आप भूल जाते हैं. Because we are not very strong, therefore there's every possibility that we will forget what we learned in when we come into bad association. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी हम शुद्ध प्रकृति में स्थित नहीं हैं. तो इसलिए हम कुसंग हमें हमारे अच्छे गुणों को भूलने में और उन्हें विस्मृत करने में सहायक बन जाता है. Prabhupada says, even if there is a little inconvenience, don't give up the association of the devotees. तो प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि ये यदि सत्संग में रहना थोड़ा डिफिकल्ट भी हो तो भी हमें इसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए यदि हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं. So I'll add a little comment from that I heard in a class. I don't remember who said it, but they gave the example. माता जी अपनी एक क्लास के बारे में कुछ याद करा हुआ कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे. So sometimes when we're in the association of devotees, we face some difficulty. We have some trouble with some other devotees. कई बार जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो हमें उनके संग के साथ कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. But when we're in the company of non-devotees, we also have some trouble at times. लेकिन जब हम कुसंगियों का साथ करते हैं तो भी हमें दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है. But there's a big difference between the two. परंतु इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. When we have difficulty in the association of devotees, for us it is purifying. लेकिन जब हम भक्तों के संग में हुई दिक्कतों का सामना करते हैं तो ये हमें शुद्ध करता है, हमारी चेतना को शुद्ध बनाता है. But if we have difficulty in the association of non-devotees, it is simply binding. परंतु अब भक्तों के संग से आने वाली दिक्कतें हमें और बंधन में डालती हैं, हमारी चेतना को और अशुद्ध बनाती हैं. Okay. One quote is here will come up in the following verse, so I'll leave that one. In the course of traveling and chanting the glories of the Lord, जब हम traveling and chanting the glories of the Lord, जब हम यात्रा पर होते हैं और महामंत्र का जप कर रहे होते हैं, a Vaishnav preacher finds a submissive devotee willing to hear about Krishna. तो एक वैष्णव प्रचारक को कोई ना कोई भक्त जो कि भगवत लीलाओं और महिमा को सुनना चाहता है मिल ही जाता है ऐसे प्रचार.
The preacher will always give his merciful association to such a person. तो एक ऐसा वैष्णव प्रचारक ऐसे भगवत भक्त को हमेशा अपना दयापूर्ण साथ संग देकर प्रदान करता है। But a Vaishnava should strictly avoid those who are not interested in hearing about Krishna. परंतु एक वैष्णव प्रचारक को पूरी तरह से ऐसे कुसंगियों का साथ छोड़ना होगा या छोड़ देना चाहिए जो कि भगवान की लीलाओं, भगवान के गुणों का या भगवान के नाम को नहीं सुनना चाहते या उनकी कोई रुचि नहीं है इन सब। Very good. Thank you. Now, the last one we have is Sadhu Vritti, following the footsteps of previous acharyas. अगला और आखिरी है सतोवृत्ति अर्थात सुवृत्ति आचार्यों का अनुशीलन। One must follow in the footsteps of previous authorities in the line of disciplic succession. गुरु परंपरा में आने वाले पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा दिए गए मार्ग का अनुशीलन हमें करना चाहिए। Otherwise, even the most intelligent men will become bewildered regarding the standard actions of Krishna consciousness. नहीं तो एक परम बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित होने की संभावनाएं रखता है। This indicates we should follow the footsteps of a genuine spiritual master or acharya. इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अपने गुरु और या फिर पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा बताए गए नियमों का और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। The acharya is teaching and showing by his example, and we should follow. एक आचार्य केवल प्रचार से नहीं अपने आचरण से भी हमें भक्ति में सेवा के कार्यों को समझाते हैं। We cannot deviate from the path of the previous acharyas. We must strictly follow. हमें बहुत स्थिर रहकर पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा बताए गए भक्ति में सेवा के मार्ग का पालन करना चाहिए और उन नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। Therefore, I repeatedly say to my students, you chant Hare Krishna mantra 16 rounds and follow the regulative principles. इसीलिए मैं बार-बार अपने सभी शिष्यों को निर्देश देता हूँ कि आप 16 माला का जप कीजिए और 4 भक्ति में नियमों का दृढ़ता से पालन कीजिए। Your strength is there. आपकी सारा बल, आपकी सारी शक्ति इन्हीं 2 नियमों में समाहित है। Don't deviate from that instruction. इस मार्ग से कभी मत हटिए। Then, हमेशा लगे रहें। then you will stand as strong as the Himalayan mountain. इसमें इतना दृढ़ होना चाहिए जितना कि हिमालय पर्वत। Anyone can do it. It is very simple. इसे कोई भी कर सकता है। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। Stick to the principle of following the footsteps of previous acharyas. उन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन कीजिए जो कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें दी। Don't add anything. इसमें अपनी तरफ से कोई भी कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए Don't subtract anything. और ना ही इसमें से कुछ भी हटाना या घटाना चाहिए। Present as it is and keep your spiritual strength intact. इसे यथारूप स्वीकार करना चाहिए और यथारूप में ही इनका पालन होना चाहिए। Then preaching will go on and nobody can disturb you. तब आपका प्रचार चलता रहेगा और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना ही आपको कोई विचलित करेगा। Okay, now here's a few things from a summary. Complete formula for a formula for complete success. अब हम सफलता के एक फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। So this means this verse is a complete formula. अर्थात ये जो हम श्लोक हम पढ़ेंगे ये है फॉर्मूला।
Enthusiasm, patience, firm conviction, following rules and regulations, dealing straightforward, no duplicity, in the association of devotees. If you can keep these 6 principles, ये जो 6 प्रिंसिपल्स 6 सिद्धांत जो हमने पढ़े, माधु जी वन लाइन utsaha nischay dharya tatat karma pravartanat jana sangatyaga sato vritihi. ये 6 सिद्धांत, ये फॉर्मूला है हमारी भक्ति में निश्चित प्रगति का. If you can keep these 6 principles always in front of you, then your progress in Krishna consciousness is sure. There is no doubt. यदि हम इन 6 सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं तो कृष्ण भावनामृत में हमारी सफलता निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है. Now, here's a nice summary in his own words. 6 principles. 1 must be very enthusiastic. Yes, in this life I shall complete my Krishna conscious business. हमें इतना उत्साही होना चाहिए इन 6 सिद्धांतों का पालन करने में कि कृष्ण Krishna consciousness, he says business. You can replace with any word you like. कृष्ण कॉन्शियस बिजनेस अर्थात कृष्ण भावनामृत को पाने के लिए हमें बहुत ही उत्साही होना चाहिए. I will not wait for my next life. हम अब मैं अगले जन्म का वेट नहीं करूँगा. In this life I shall finish. और ये जीवन ही मेरे लिए पर्याप्त है. मैं इसी में भगवत प्राप्ति का पूर्ण प्रयास करूँगा. This is called utsaha. यही उत्साह है. And dhairya. Dhairya means patience, not that I do not find I'm making much improvement. We should have patience. हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कभी सुधर नहीं सकता या मुझ में सुधार नहीं आ सकता. नहीं, हमें हमेशा ही धैर्यपूर्वक अपनी भक्ति में सेवाओं का निष्पादन करना चाहिए. And nischaya, with confidence. Because we are following the standard rules and regulations, success is sure. हमें हमेशा ही दृढ़तापूर्वक अपनी सेवाओं का पालन इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ये सिद्धांत हमें अवश्य ही भगवत प्राप्ति कराने का एक सफल फार्मूला है. That confidence must be there. इतना निश्चय तो होना ही चाहिए. Just like 2 plus 2 equals 4. जिस प्रकार 2 जमा 2 4 के बराबर होता है. It is a fact. और ये एकदम सिद्धांत है, सत्य सिद्धांत है. Similarly, if you follow the principles laid in the Shastras, then success is sure. उसी तरह यदि हम शास्त्रों में विहित निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है. The Krishna consciousness movement is a great art of life. कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन एक महान महान कला है जीवन जीने की. It's very easy and sublime. ये बहुत ही दिव्य है और ये बहुत ही आसान है. We prosecute Krishna consciousness through singing, dancing, eating, and hearing philosophy. हम कृष्ण भावना अमृत को करने का आसान तरीका हमारा यही है कि हम गाते हैं, नाचते हैं, खाते हैं और He- मजे करते हैं. hearing philosophy received through the disciplic succession. और हम ज्ञान का अनुशीलन भी करते हैं जो कि हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ. Coming down from Krishna himself. The parampara is coming from Krishna himself. ये परंपरा स्वयं भगवान से अवतरित हुई. Therefore, Krishna consciousness will give us complete spiritual success. इसलिए कृष्ण भावना अमृत हमें पूर्ण सफलता देता है. Good, thank you. Now, does anyone have any questions or comments or anything to add from today's class? किसी का कोई प्रश्न हो तो माता जी इनवाइट करते हैं. Thank you. I can't see your face, but I can hear your voice. Very good. Hare Krishna.
Good. I was out. I didn't expect that I'll be getting late. I cannot say so. Okay. All right. So much. I enjoyed it. It was after so long. Like after 2 months. Yeah, I know. I've been waiting and waiting every time. And me and Vrindavan Aishri were ready weeks and weeks ago. Maybe we can have it on next Saturday as well. We can do if you like. So next week we're going on with the Acharya's commentaries, and I think we might go another week after that to do Satovratihi properly, because what is actually Bhaktivedanta Thakur has given, he's actually written down the behaviors of our previous acharyas for us to follow. So he's given guidelines for grihastas, guidelines for renunciants, and guidelines for all Vaishnavas. So I think that might take it. It's very nice, and so it may take 2 weeks for us to go through the Vaishnava acharyas for this one. And I like 2 points today that Prabhupada wants everyone to wake up by 4 a.m. and do Mangal Aarti. Good, I like that one as well. And the second one is that there are problems whether we are in the association of devotees or non-devotees. Good. Being in the association of devotees is purifying. Yeah. Burijan Prabhu gave the example. He says, do you know how precious stones are polished? भूरीजन प्रभु अपने एक उदाहरण में देते हैं कि किस तरह जो प्रेशियस जेम्स क्या बोलते हैं एक वैल्यूबल पत्थर को किस तरह तराशा जाता है तराशने में तो थोड़ी बहुत तो घिसाई तो होती ही है तो इसी प्रकार सत्संग में रहते हुए हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है परंतु जिस प्रकार घिसाई के बाद पत्थर चमक उठता है उसी तरह हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है Yeah. भक्ति का कारण So the precious stones go in a big drum and they get turned around, and the pointy bits of one stone will rub off the pointy bits of the other stone. So when we get a little aggravated with the devotees, and they're purifying us and we're purifying them. तो जब हमें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सत्संग में रह के तो हम उन्हें शुद्ध करते हैं और भक्त हमें शुद्ध करते हैं But we shouldn't deliberately offend someone thinking that we're going to purify them. परंतु हमें किसी को इस प्रकार ऑफेंड नहीं कर देना चाहिए ये सोच के कि हम उन्हें शुद्ध कर दें हमारी चेतना इसी तरह की होनी चाहिए कि हमारी शुद्धि हो जाए All right. Any other comments or questions or things to add? So we'll finish here. Now, Vrindavan Yeshri asked about recording. I'm actually recording on my computer off this OBS, but I don't know how well it's going to record your voices. So we can find out. All right. So thank you very much. We can end the class here, and we'll. थैंक यू माता जी And we can. थैंक यू माता जी Thank you, and we'll see you all next week then. Okay, good. Thank you. Hare Krishna. हरे Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha paritanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna.